Assalamu alaikum. Hi guys. Aj we will talk about physiology books. Physiology is a really cool subject. It's very similar to the biology you're used to studying in FSC, but obviously more centric to the human body. Physiology is the study of how your body works, essentially, right? How from cellular level to the system level, how all of your organs work together, and it's really beautiful. And if you understand physiology well, you will have a good time studying pathology, right? Because physiology gone wrong is pathology. So the first book that I'm going to talk about is Ganong's Review of Medical Physiology. कहा जाता है कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है फिजियोलॉजी की, लेकिन पर्सनली मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी. आई प्रेफर्ड गाइटन एंड हॉल ओवर दिस बुक, विच आई विल डिस्कस लेटर. इसमें कुछ सेक्शंस हैं जो अच्छे हैं, बट आई फील लाइक इट्स नॉट वर्थ कि आप पूरी बुक खरीदें. यूड रादर जस्ट कंसल्ट इट फ्रॉम द लाइब्रेरी और समथिंग. तो रेफरेंस टेक्स्ट के तौर पे अच्छा है, नॉट रियली एसेंशियल टू बाय. Now, the next book is Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. I think हर जगह हर मेडिकल कॉलेज में यही आपकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है मेडिकल फिजियोलॉजी की. अच्छी बुक है फॉर श्योर. एग्ज़ाम का सारा कंटेंट इसमें कवर हो जाता है. इसके नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि ये बुक बहुत बड़ी है, और जब बुक बहुत बड़ी होती है तो इट्स वेरी इजी टू लूज ट्रैक ऑफ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, राइट? हाई यील्ड स्टफ तो है, लेकिन देयर सो मच लो यील्ड कंटेंट ओवर देयर कि आप पढ़ पढ़ के थक जाते हो और आपको याद नहीं होता आपने क्या पढ़ा है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन काइंड ऑफ बुक. अगर आपको हाईलाइटिंग करनी आती है या अपने आप ऊपर नोट्स बना लें, एक क्योंकि बार बार ये किताब नहीं पढ़ी जाती, बहुत बड़ी बुक है. But definitely you must have it क्योंकि it's a solid reference book, very nice book. Then we have Guyton and Hall की ही pocket book है. इसको हम मिनी गाइटन कहते थे. डेफिनेटली इट्स नॉट इनफ फॉर एग्ज़ाम्स. रिव्यू बुक के तौर पे ठीक है, लास्ट मिनट स्टडी करनी है, आपके पास टाइम नहीं है पूरी गाइटन एंड हॉल पढ़ने का, तो पढ़ा जा सकता है, बट इट्स डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड. अगर आप ये नहीं भी खरीदेंगे तो इट्स टोटली फाइन. Now, this book is Physiology by Linda S. Costanzo. मैंने पर्सनली ये बुक नहीं पढ़ी थी क्योंकि उस वक्त मुझे इस बुक का पता नहीं था, बट आई हैव हर्ड रियली नाइस थिंग्स अबाउट इट. स्पेशली अगर आपको गाइटन एंड हॉल नहीं पसंद तो ये उससे काफ़ी छोटी बुक है, एंड इट्स स्टिल एज गुड एज टेक्स्ट बुक वर्दी बुक है. तो इट्स गुड एज अ प्राइमरी बुक. इसके साथ यू कैन कंबाइन स्मॉलर बुक, लेकिन इट्स अ गुड टेक्स्ट टू रीड फॉर योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग. Now, this is a book that I did buy. It's called Human Physiology from Cells to Systems by Lauralee Sherwood, aka Sherwood. हम इसको सिर्फ Sherwood कहते थे. बहुत अच्छी बुक है. I loved it. टेक्स्ट बुक है या नहीं है, इसके अंदर इतने खूबसूरत अंदाज से और बड़े क्रिएटिव अंदाज से चीज़ों को डिस्कस किया गया है. आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बन जाते हैं. मतलब मैं तो इसको एज अ लेजर रीडिंग के लिए रखती थी. मैं पहले इस बुक से पढ़ती थी ताकि मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो, मेरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बन जाए, और उसके बाद मैं गाइटन एंड हॉल खोलती थी, और जो चीज़ें मुझे लगता था कि इसमें बेहतर लिखी हैं मैं इससे नोट्स गाइटन एंड हॉल में ट्रांसफ़र कर देती थी. I definitely recommend that you buy it. You must have a good physiology book that you like. But definitely, it's not enough for exams. It cannot be your primary book. Okay, so the next book is Essentials of Medical Physiology, Sembulingam. We used to call it JP. ये हर कोई नहीं खरीदता, मैंने सिर्फ आउट ऑफ इंटरेस्ट ली थी बिकॉज आई जस्ट लव बाइंग बुक्स. आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद दिस वन. ये काफ़ी बेसिक है. ऐसा लगता था जैसे मतलब FSC स्कूल लेवल की बायोलॉजी बुक है. मेडिकल बुक नहीं फील होती थी जैसे ये है. इसमें सारा टेक्स्ट ही टेक्स्ट था और हार्डली एनी डायग्राम्स. हाँ, बड़ा बड़ा फॉन्ट था, खुला खुला लिखा हुआ था, तो जल्दी पढ़ा जाता था, लेकिन ये काफ़ी मोटी बुक है. और आई फील कि अगर आपके पास गाइटन है, शरवुड है, तो इस बुक की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. सो आई डोंट सजेस्ट दैट यू बाय दिस वन. नाउ एज यूजुअल कैप्लन सीरीज़ में ज़रूर मेंशन करती हूँ हर जगह, बिकॉज कैप्लन इज़ एक्चुअली वेरी गुड. तो जब आपके कॉन्सेप्ट बन जाएंगे
तो रिव्यू बुक के तौर पे ये बहुत अच्छी किताब है। सेम गोज़ फॉर द BRS सीरीज़। BRS जो है उसकी सारी बुक्स अच्छी नहीं होती, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। लेकिन जो अगर पॉपुलर जो है ना BRS, उसमें ये फिजियोलॉजी वाली आई थिंक नंबर 1 पे है। ये सब पसंद करते हैं, ये वाक़ई बहुत अच्छी किताब है। इसमें जब आप थॉरो रीडिंग अपनी बड़ी बुक से कर चुके हों, तो ये आपको बड़ा अच्छा कंसाइज़ रिव्यू देता है। इसमें सारे हाई यील्ड पॉइंट्स हैं और यू शुड कंबाइन दिस विद योर मेन टेक्स्ट बुक। ऑब्वियसली BRS अस्यूम्स कि आपका कॉन्सेप्ट पहले से बना हुआ है। कॉन्सेप्ट के बगैर इसको खोलेंगे तो फिर आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी ये बुक। इट्स डिफ़िकल्ट उस तरह से, लेकिन कॉन्सेप्ट है तो फिर इट्स रियली नाइस। फाइनली प्री टेस्ट सीरीज़, ये बुक जो है बस ठीक थी, नॉट दैट ग्रेट। यू डोंट नीड टू बाय इट। इसमें जस्ट क्वेश्चंस हैं थोड़े से, बट आई फील कि इसके क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं compared to the actual exam questions. So yeah, I just mentioned it because I had it. So yeah, if you like this video, please like, comment, share, and subscribe to my channel. Follow me on my social media, and I will see you in the next one. Bye.